Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. Today's topic is numbers. Now to understand maths, we have to learn numbers because maths means numbers. तो maths समझने के लिए numbers को समझना बहुत जरूरी है. So this is a very important topic. So this topic numbers we have divided into four parts, and in the today's model, that is the first part, we will learn about the types of numbers. So first let me share the screen with you. Okay. So as I said, this topic we have divided into four different parts. Today's model, the first part we will cover types of numbers. Second part we will cover divisibility rule. Third part we will see the unit digit theorem, and the fourth part we will learn about remainder theorem. So first in today's module, let's understand the different types of numbers. Okay? So let's enter into the world of numbers. Now, जैसे ही नंबर्स बोलते हैं हमारे दिन में कुछ ख्याल आते हैं कि ओके नंबर्स मींस नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स वगैरह. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ नेचुरल नंबर्स. सो नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स. इट्स अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स. सो बेसिकली these are वो numbers which we can count, and natural number is represented by capital N. Natural number starts with 1 because these are the numbers which we can count, then 2, 3, and it goes to infinity. Natural number, smallest natural number is 1, and then 2, 3, 4, 5, 6, and like that it goes to infinity. Natural numbers में अगर हम 0 add कर दें, then it becomes a whole number. So when 0 is included in the set of natural numbers, then it forms whole number. It is denoted by capital W. So you can see here that 1, 2, 3 are natural numbers और इसमें 0 add कर दिया. So now this has become the whole number. So whole number starts with 0 and it goes till infinity. अच्छा, अभी तक हमने जो भी numbers किए उसमें negative numbers नहीं आए हैं, but when we talk about integers, then negative numbers also come into the picture. So when in the set of whole numbers, natural numbers with negative sign are also included. So basically integers कौन से वाले numbers होते हैं? So they are positive numbers, all the negative numbers plus 0, then it becomes integers. Integer is denoted by capital I or Z. So integers में you can you'll find all the natural numbers, that is 1, 2, 3, 4. You'll find 0 and the negative sign of all the natural numbers. So numbers with their negative sign are also there. अच्छा, 0 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव इंटीजर होता है? तो 0 इज नीदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव. तो 0 ना पॉजिटिव वैल्यू है ना नेगेटिव वैल्यू है, वो उन दोनों के बीच में बैठा है. सो इफ आई वांट टू ड्रॉ अ नंबर लाइन, सो नंबर लाइन में वी नो दैट कि दिस इज 0. जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे द नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, और लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो नंबर्स जो है वो छोटे छोटे होते जाएंगे. सो दिस यू कैन रिप्रेजेंट एज 1, दिस इज 2, this is 3, 4, and it goes till infinity. And here we have to write all the negative numbers, and this goes till negative infinity. So ये पूरे हमने लिखे हैं integers, और इसी integers के बीच में वो numbers आते हैं जिसमें point होता है, यानी कि fraction वाले numbers, जिसे कहते हैं rational number. So next is a rational number. What is a rational number? So the definition of rational number is something like this: a number which can be represented in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q cannot be equal to 0. ठीक है? So basically rational numbers are numbers which you can write in the form of fraction. So P and Q integers होने चाहिए, Q should not be 0, because we know that कि denominator में कभी भी 0 नहीं होता. That is not defined. Rational numbers include natural numbers, whole numbers, integers, fractions of integers, and certain type of decimals. कौन से वाले decimals? So terminating decimals and recurring decimals. We will understand about this terminating decimal and recurring decimal later. So rational number में whole number भी आते हैं, natural number भी आते हैं, integers भी आते हैं, plus वो fraction वाले numbers भी आएंगे. For an example, 2, which is a natural number, is also a rational number. -9 is an integer and hence it is also a rational number. 0 is also a rational number. 9/2 तो आपको साफ साफ दिख रहा है, this is written in the form of P by Q.
So this is also a rational number. Negative integers are also allowed. So minus 4 by 5 is also allowed. This is a rational number. 0.33333 like this type of numbers are also rational numbers. So कोई भी number को अगर आप fraction में लिख पाते हो, that those numbers are called as rational numbers. So what is an irrational number? Exactly opposite to the numbers which you cannot write in the form of p by q. मतलब आप उसे fraction में नहीं लिख सकते हो. Those numbers are called as irrational numbers. अच्छा, एक particular type के decimal होते हैं, that is non-recurring, non-terminating. This decimals form the part of irrational numbers. ये क्या होते हैं? ये once again we will see it later on. So some examples of irrational numbers are √2, √3, pi. जैसे √2 को आप कोई फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते. √2 की वैल्यू 1.41 और बहुत कुछ आगे लिखा है. दिस कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. सिमिलरली पाई. अभी देखो पाई की वैल्यू तो हमें पता है 22/7 है और वी कैन से इट इज 3.14. सो हियर यू कैन सी दैट 22/7 इज अ रैशनल नंबर, राइट, बिकॉज इसको हमने एक फ्रैक्शन में लिख दिया है. Similarly, 3.14 को we can write as 314/100, which is also a rational number. So the question arises here that if 22/7 or 3.14, which is the value of pi, if these two values are rational number, then how come pi is an irrational number? जब pi की वैल्यू 22/7 है तो वो रैशनल नंबर क्यों नहीं है? बिकॉज पाई का वैल्यू एक्चुअली में 22/7 नहीं है, ना ही उसकी वैल्यू 3.14 है. पाई की वैल्यू तो 3.14 और आगे बहुत 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 कुछ लिखा है. एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई तो अभी तक किसी को शायद पता भी नहीं है. बट क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए सिर्फ इतनी वैल्यूज रखी है. बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एंड 100% करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई. ठीक है, and hence pi is an irrational number, period. So you can see here that अगर हमें इन नंबर्स का एक वेन डायग्राम बनाना है तो किस तरह से बनेगा. तो सबसे अंदर आएंगे नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 वाले नंबर्स. उसके ऊपर आते हैं होल नंबर्स where 0 is also included. Then comes integers wherein the negative numbers are also there like -5, -2. इंटीजर्स तक के जो भी नंबर्स है ये पूरे पूरे नंबर्स है, होल नंबर्स बेसिकली. उसके ऊपर आते हैं रैशनल नंबर्स वेर इन वी राइट द फ्रैक्शन वाले नंबर्स लाइक -3.4, 3/4. दिस ऑल आर रैशनल नंबर्स. द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल दे आर इररेशनल. सो ये दिस इज रैशनल, दिस इज इररेशनल, आर टू डिफरेंट कैटेगरीज. Irrational numbers examples are √2, √3, √10, pi and such type of numbers. ये सब numbers बना के मिल जाता है real numbers. So what is a real number? Real number is nothing but the rational number plus irrational number. They form real number. और जो numbers real नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? So those numbers are called as complex number. So let's understand what is a real number and complex number. So real number is any number that can be found in the real world is real number. जो नंबर समझ में आते हैं ना हमें उसे कहते हैं रियल नंबर, और जो समझ के परे है तो those numbers are complex numbers. So any number that we can think of except complex number is a real number. Real number can be represented on a number line. तो ये जो अपना नंबर लाइन है ना उसमें हम रियल नंबर को लिख सकते हैं. ठीक है, इनफैक्ट ये नंबर लाइन पे हम इररेशनल नंबर भी लिख सकते हैं. तो इफ आई वांट टू राइट √2 ऑन दिस नंबर लाइन दैट कैन बी डन. सो अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, सो वी नो कि √2 इज समवेयर हियर. दिस आल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड प्रॉपर्ली ऑन अ नंबर लाइन, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. सो रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स. Complex numbers. A complex number is a number that can be expressed in the form of a plus bi. उसमें ये I जो होता है ये imaginary number होता है. These numbers can't be represented on the number line. Example of a complex number is under root of -1. Now we know that under root of 1 is 1 only, but under root of -1 कोई भी नंबर का स्क्वायर कभी भी माइनस नहीं होता. So those numbers are called as complex numbers. Next.
इवन नंबर, ऑड नंबर्स, आई थिंक एवरीवन नोस व्हाट इज एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. The set of natural numbers which are divisible by 2, those numbers are called as even numbers. And even numbers always ends with 0, 2, 4, 6 or 8, denoted by capital. So the smallest even number is 2. So it's 4, then 6, 8, 10, 12, 14, 16, like this it goes on. Similarly, odd numbers, the set of natural numbers which are not divisible by 2. कोई भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड नहीं कर पाते हो, then those numbers are called as odd numbers. So basically the numbers which are not even, those numbers are odd numbers. Odd numbers always ends with 1, 3, 5, 7 or 9. This is just for your information कि आपको पता होना चाहिए कि even plus even जो sum होता है वो हमेशा even ही होता है. आप एक एग्जांपल लेके देख सकते हो. सपोज 2 is an, we know that 2 is an even number, so 2 plus 4 is equal to 6, which is also an even number. तो दो even number का sum is always an even number. Even number plus odd number का sum is always an odd number. For an example, 2 plus 1, that is 3, which is an odd number. Odd plus even always gives you the answer as an odd number, and odd plus odd always gives you an even number. For an example, 3 plus 5, answer is 8. Next, even into even. Now let's see multiplication में क्या होता है. इवन नंबर को एक दूसरे इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, सो आंसर विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर. इवन इंटू ऑड, जैसे कि आप यहाँ पर देखो 2 into 4 is 8. Even into odd, so 2 into 3 is 6. So even into odd is will also give you an even number. Odd into even will once again give you an even number, and odd into odd, for an example 5 into 3, 15. So this will always give you an odd number. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. Next. So we learnt about natural numbers, whole numbers, integers, rational, irrational, real, complex. Now let's understand what is prime number, composite number, co-prime numbers. Prime numbers. The natural numbers which have no factor other than 1 and itself are called prime numbers. So basically prime numbers find out करने के लिए you need to find out the factors of the number. अगर कोई भी नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स है, 1 जो कि वैसे भी सबका ही फैक्टर होता है, एंड द नंबर इटसेल्फ, देन दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स. बेसिकली प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं ना जो आपको कभी भी किसी के भी टेबल्स में कभी दिखते ही नहीं है. ओके, सो प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर, वन इज 1, सेकंड इज इटसेल्फ. सो लेट्स सी वेदर 1 to 20 में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं. सो प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. Smallest natural number is 1. So let's see whether 1 is a prime number or it is not a prime number. So 1 के factors कितने हैं? So 1 तो basically एक ही के टेबल में आता है, that is 1. So prime number की condition ये है कि it should have two factors, but 1 has only one factor, so it is not satisfying the definition of prime number. So 1 is not a prime number. Let's take 2. 2 के factors है 1 and 2. So basically 2 has got two factors, one is 1 and second is itself. So yes, 2 is a prime number. In fact, we can say now that 2 is the smallest prime number. Next, number 3. 3 has got two factors, 1 and 3. So since it has got exactly two factors, we can say that 3 is a prime number. Next, 4. 4 के तीन factors है, 1, 2 and 4. So since 4 has got three factors, so 4 is not a prime number. In fact, 2 के अलावा कोई भी even number prime number नहीं हो सकता. Always the odd numbers are only prime numbers. Exception is 2. ठीक है, तो इसके बाद कोई भी even number prime number नहीं बनेंगे. So if I want to see from 1 to 50, how many prime numbers are there? So we can say that 1 is 2, which is the smallest prime number. Then next 3. इसके बाद हम कभी भी कोई भी even number नहीं लिखेंगे. Next 5, 7. I can't write 9 because 9 जो है, it is a factor of, it's a multiple of 3. 9 के तीन factors है, so 9 won't come. Next prime number is 11. Then 13. 15 नहीं आएगा क्योंकि वो 5 और 3 के टेबल में हमको दिखता है.
नेक्स्ट इज 17, 19, 21 नहीं आएगा क्योंकि वो 3 और 7 के टेबल में आता है। 23, 25, 27 वी कांट राइट। 29, 31, 33, 35 वी कांट राइट। 37, 39 3 के टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है, नहीं चलेगा। नेक्स्ट 41, 43, 47। सो दिस आर द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। कितने प्राइम नंबर्स हैं? इन टोटल देर आर 15 प्राइम नंबर्स। सो ये आपको पता होना चाहिए that the total prime numbers from 1 to 50 are 15 and total prime numbers from 1 to 100 are 25. So basically there are 15 prime numbers from 1 to 50 and 25 prime numbers from 1 to 100. All prime numbers, let's see some properties of prime number. All prime numbers other than 2 are odd numbers, but all odd numbers are not prime numbers. ठीक है, तो prime numbers हमेशा odd numbers ही होते हैं, exception is 2, but it is not necessary that all numbers have to be prime numbers. जैसे कि 9 एक odd number है, but it is not a prime number. 15 odd number, but it is not a prime number. 2 is the only even prime number. This we know. 2 is the smallest prime number. Yes. 3, 5, 7, only 3 prime numbers which are consecutive odd numbers. So 3, 5, 7, ये तीनों के तीनों prime numbers हैं and they are consecutive odd numbers. This is the only pair. Next, let's see what is a composite number. So the whole numbers which are divisible by numbers other than itself and 1 are called divisible numbers, or we can say the numbers which are not prime numbers are composite or divisible numbers. In short, composite number should have minimum 3 factors. So definition of composite numbers is that it should have minimum 3 factors. One and itself तो है ही, इसके अलावा कम से कम एक और फैक्टर होना चाहिए. So basically जो भी नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं, एक्सेप्ट 1, बिकॉज 1 का एक ही फैक्टर है एंड दैट इज 1. Prime number should have 2 factors, so I can't say that 1 is a prime number. क्या है? नहीं है. Similarly, composite number should have minimum 3 factors, जबकि 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, so 1 is not a composite number. So 1 is neither prime nor composite. Except 1, all the numbers which are not prime, they are composite numbers. Next is co-prime numbers. Now let's see what is a co-prime numbers. Two numbers which have no common factor except 1 are called as co-prime numbers. तो दो नंबर्स के पास फैक्टर्स तो हो सकते हैं बट कुछ भी कॉमन नहीं है, देन वी कैन से दैट दिस नंबर्स आर co-prime numbers. Co-prime numbers are always in pairs. Okay, let's take one example. For an example, if I'll take the number 3 and 11. So 3 has got 2 factors, one is 1 and 3. 11 has got 2 factors, 1 and 11. Both are prime numbers. 3 and 11 both are prime numbers. अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है? फैक्टर्स में कॉमन क्या है? सो ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर, जो कि वैसे भी सब में ही होता है. So this two numbers 3 and 11 are called as co-prime numbers. ठीक है. Let's take one more example, 9 and 16. So 9 के factors अगर हम देखें, so the factors of 9 are 1, 3, 9. 16 के factors 1, 2, 4, 8, 16. So 9 is a composite number, 16 is a composite number because both of them has more than 2 factors, that is why. But common factor कितना है 9 and 16 में? So common factor is only 1. And since their common factor is only 1, so we can say कि 9 and 16 are co-prime numbers. What we learned here is कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, अगर आप उनकी पैर बना दो दो की, so they all will form a co-prime number.
बिकॉज प्राइम नंबर में वैसे भी कोई फैक्टर्स होते नहीं है, तो फैक्टर्स ही नहीं है, तो कॉमन फैक्टर कहाँ से आएगा? बट even the composite numbers can be prime numbers. For an example, 9 is a composite number, 16 is a composite number. बरबर के फैक्टर्स है उनके पास, बट कॉमन कुछ भी नहीं. So this type of numbers are also called as co-prime numbers. So it is not necessary that co-prime numbers are prime numbers. Even composite numbers can also form the pair of co-prime numbers. So composite numbers can be prime numbers or it can be composite co-prime numbers. तो को प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं. टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज अ को प्राइम नंबर, दिस वी नो. अच्छा, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो को प्राइम नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं. So can we say that HCF of a co-prime number is always 1? ठीक है. तो 9 and 16 का HCF 1, 4 and 17 का HCF 1, 80 and 81 का HCF 1. Next. Now let's understand about decimal. So decimal are of two types. Basically, decimal are of three types. First one is terminating, second is non-terminating. Now let's see what is terminating. Terminating, as the name suggests, these are the decimal which gets terminated. यानी कि वो खत्म हो जाते हैं. For an example, 0.15, 0.33, 0.85. These are called as terminating decimal. Now all these decimals are rational numbers. Why they are rational numbers? Because these numbers can be represented in the form of fraction. For an example, 0.15 को हम 15 by 100 लिख सकते हैं. 0.33 can be written as 33 by 100. For 0.85 can be written as 85 by 100. So this all numbers can be written in the form of fraction and hence they are rational numbers. Next type of decimal is non-terminating. मतलब वो decimal जो खत्म ही नहीं हो रहे. For an example, 0.3333 ऐसे ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है. 0.451278 ऐसे कुछ तो है पैटर्न. So non-terminating decimal are also of two types. One is repeating non-terminating and one is non-repeating non-terminating. यानी कि वो डेसिमल, ये वाले डेसिमल वो होते हैं जो खत्म तो नहीं हो रहे, but the digits are getting repeated. For an example, 0.3333 like this. You can see here that this is non-terminating, but the digits are getting repeated. Whereas this is an example, 0.451278 is an example of non-repeating, non-terminating. So ये वाले decimals we know that they are rational numbers. Even these numbers are also a rational number. मतलब आप 0.3333 जो चूंकि चल रहा है, this can be written in the form of p by q. इसे आप fraction में लिख सकते हो. Whereas this cannot be written in the form of p by q. So this is an irrational number. ये rational number. This is irrational number. Now the question arises कि ये number जो कि खत्म हो ही नहीं रहे, तो इसको fraction में कैसे लिखेंगे? Let's learn the trick. Suppose the number is written in this particular pattern 0.a like this. So आपको याद होगा तो स्कूल में हम इसको ऐसे लिखते थे 0.a bar. इसको अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखोगे? So first of all you have to write this a and divide by 9 करना है आपको. किससे करना है? Divide by 9. Now why we have to do divide by 9? इसके पीछे एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है which you had learned in the school. बट वो कॉन्सेप्ट से अगर हम करने जाएंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. सो यू टू जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू डू इज डिवाइड बाय 9. सो अगर नंबर ऐसा है 0.3333 मींस इट इज लाइक दिस 0.3 बार. सो दिस कैन बी रिटन एज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 3 and in the denominator we have to write, so it is 3 by 9 which is equal to 3 by.
यानी कि अगर आप 1/3 करोगे ना तो यू विल गेट द आंसर इज 0.333। लेट्स सी द एग्जाम्पल। 1/3 करते हैं। 3 के टेबल में 1 नहीं आता, सो विल पुट पॉइंट 0 पॉइंट। आप देख रहे हो ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। सो 1/3 मीन्स 0.33333 लाइक दिस। नेक्स्ट पैटर्न, suppose the numbers are like this: 0.ab, ab, ab, wherein the two digits are getting repeated। मतलब पैटर्न ऐसा है 0.ab बार। बार का मतलब होता है कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। So what we will do for this, once again in this particular case we will write the number ab divide by, now how many digits are getting repeated? So there are two digits which are getting repeated, तो उसके लिए we will write 9 टू टाइम्स। तो अभी 9 नहीं लिखेंगे, अभी 99 लिखेंगे। सो लेट्स सी द एग्जांपल। 0.23 बार, दिस कैन बी रिटन एज 23 डिवाइड बाय 99। नेक्स्ट पैटर्न, पॉइंट एबीसी, 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 it is like this: abc bar, this we will write as abc divide by 999। why 999? Because there are three digits which are getting repeated, so this can be written like this: 0.321 bar, which is 321 divided by 9। Now let's see, now there is a slight change in the pattern. Now you see this particular pattern, it is 0.ABBBB. So here after point there are two digits, one is A and one is B, but A is not getting repeated, only B is getting repeated. So ये ऐसा pattern है कुछ 0.AB। Now I will make bar only on B because सिर्फ B repeat हो रहा है। इस टाइप के केस के लिए क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस नंबर ए बी एज इट इज, देन यू हैव टू पुट अ माइनस साइन, और माइनस के बाद क्या करोगे? तो ये जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, द नंबर विच इज नॉट गेटिंग रिपीटेड, दिस यू हैव टू राइट डिवाइड बाय। नाउ बी इज गेटिंग रिपीटेड, so for b I will write 9, a is not getting repeated, so for a I have to write 0। मतलब क्या है? अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसके लिए 9 लिखना है, रिपीट नहीं हो रहा है तो वो डिजिट के लिए 0 लिखना है। वंस अगेन, why to write 0? so there is a big concept behind it। कॉन्सेप्ट से बहुत टाइम लगता है, सो हम करेंगे ट्रिक से। दिस इज 0.21 बार। व्हाट वी विल डू, विल राइट 21 minus 2 डिवाइड बाय 90। सो दिस इज बेसिकली 19 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, तो अगर आप 19 डिवाइड बाय 90 करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट पैटर्न, point A B C C C C, so this is like this: 0.ABC bar is on C only। इसको हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट आई विल राइट द होल नंबर ABC माइनस द डिजिट्स विच आर नॉट गेटिंग रिपीटेड इज AB, सो माइनस AB। C रिपीट हो रहा है तो उसके लिए 9, AB रिपीट नहीं हो रहा है तो उसके लिए 0। so this can be written like this: 321 minus 32 upon 900। Next pattern is 0.ABCBCBC, so here you can see that only BC is getting repeated, so what we will do is ABC minus A। why? Because A is the only digit which is not getting repeated। C के लिए 9, B के लिए 9, and for A we have to write 0। This is how we can write 321 minus 3 is 318 by 9। ठीक है, सो क्वेश्चन इसी में से एक पैटर्न पे बेस आएगा। We have covered all the patterns here। Now let's solve the question। Value of 2.427 bar in the form of fraction।
Okay, now here you can see that before the point there is a digit 2. इसको आप फिलहाल इग्नोर कर सकते हो because everywhere it is written 2. So वो 2 हम बाद में चिपका देंगे. Concentrate on this 0.427. This can be written as 427 minus 42. 7 is getting repeated तो उसके लिए 9. जो रिपीट नहीं होता है उनके लिए 0. So it is 385 by 900. 5 से डिवाइड करेंगे तो 180. 5 से डिवाइड करेंगे तो 77. तो आंसर इज 77 by 180. और ये आगे 2 लगाना है. So it is 277 by 180. Option third is the correct answer. Find the value of 0.2 bar plus 0.3 bar plus 0.32 bar. Okay, now अगर क्वेश्चन ऐसा होता, find 0.2 plus 0.3 plus 0.32. So how we would have done? Now here nothing is there, so we'll write 0. Nothing is there, so we'll write 0. This is 2, 8. ये होता. But the question is not this. Question is this. 0.2 bar plus 0.3 bar plus 0.32 bar. This can be written like this. यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 नहीं लिख सकते because ये बार है. It means that 3 is getting repeated. So here we have to write 3. Similarly, here I have to write 2. This is 7, 8, 0.87. क्योंकि हर जगह पे बार था तो यहाँ पर भी बार बनेगा. 0.87 बार is the correct answer. आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो. Let's see how to do that also. So 0.2 bar can be written as 2 by 9. 0.3 bar can be written as 3 by 9. And 0.32 bar can be written as 32 by 99. This is how we can write. Now just add them. But before we add, we have to make the numerator same. So 9 का 99 करने के लिए 11 से multiply. Here also 11 से multiply. 9 का 99 करने के लिए 11 से multiply. So 11 से multiply. So it is 22 plus 33 plus 32 upon 99. 55 plus 32 is 87 by 99. 87 by 99 को can we write like this? Yes, we can. So answer is once again 0.87 bar. But I feel that this is the best method. इसमें तो टाइम लग जाएगा थोड़ा. So this is the best method. इसको अवॉइड करेगा. Next. Now this is tricky. Find the value of 0.1 plus 0.12 bar plus 0.123 bar. Yes, okay. See how we will do this. 0.1, 0.12. इस तरह से है. In such type of fashion ना थोड़ा आपको केयरफुल रहना है, especially if the options are very close. अगर ऑप्शन दूर दूर है तो आप थोड़ा लिबर्टी ले सकते हो. But if the options are very close, you have to be careful. Okay. Now here this is 1 2 3 and here it is 1 2. So here we will write 1, but 1 नहीं लिखेंगे, साथ में 2 भी लिखेंगे. 1 2 इस तरह से लिखोगे. And here we'll write 1 1. But आप देख रहे हो अभी ये जगह खाली हो गया. So here also we will write 1 2 3. पूरा लिखना है 1 2 3. Here it is 1 2 1 2 1 2 and here it is 1 1. This is how we have to do. एंड में ये पूरे के पूरे तीनों के तीनों भरने चाहिए. इस तरह से यहां तब तक लिखते रहना है. So it is 3 plus 2 plus 1 6 4 so ये पैटर्न बनेगा 0.355446 का. दिस इज द आंसर. ठीक है, इसका आंसर ये होगा 0.355446 और उसके ऊपर बार. This is very very important. Please write down whatever formula is given here. इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपकी बुक में write this formula. Very very important. Sum of numbers.
Now, if someone asks you find the sum of the first n natural number, then the formula is n into n plus 1 by 2. तो अगर आपको कोई पूछता है कि पहले पांच नेचुरल नंबर का सम निकालो, ऐसे. Okay, so this how you will do, put n is equal to 5. So it is 5 into 6 divided by 2. So answer is 15. ठीक है, आप यहां से भी सम करोगे तो वही आ रहा है. ये हो गया 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15. आप सोचोगे इससे तो अच्छा हम यही कर दे. Why to use the formula? Now this is a very small number, right? 1 to 5. तो आप आराम से ऐड करोगे तो ठीक है. But if they ask you find the sum of the first 50 natural numbers, तो थोड़ी ना ऐड करते बैठेंगे. So in that case we need the formula. Similarly, sum of the first n odd numbers is nothing but n square. तो sum of the first 5 odd numbers का फॉर्मूला हो जाएगा 5 का स्क्वायर, दैट इज 25. यानी कि आपको ये निकालना है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9. ठीक है, आप देख लो कितना हो रहा है. 3 प्लस 7 10 और 9 प्लस 1 10 20, 20 प्लस 5 25. सो आंसर इज 25. बट इंस्टेड ऑफ एडिंग वी कैन यूज द फॉर्मूला. सिमिलरली अगर आपको ऑड नंबर की जगह पे इफ दे आस्क यू इवन नंबर, देन द फॉर्मूला इज n into n plus 1. So if you want to find the sum of the first 5 even number, the formula is 5 into 6. Next, sum of the square of the first n natural number. So the formula is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. ठीक है, तो पहले 5 नंबर नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम, मतलब अगर आपको कोई ये पूछता है, so instead of adding you can use the formula, put n is equal to 5 here. The formula is 5 into 6 into 2n plus 1 11. So answer is 55. Similarly, if they ask you to find the cube of the first 5 natural number, यानी कि इसका अगर आपको क्यूब का सम लेना है इस तरह से, तो क्या होगा? So we can, for that case also we can use the formula. The formula is n into n plus 1 divided by 2 and the whole square. n is 5, so it is 5 into 6 divided by 2 का whole square. So 15 का whole square is 225. 15 का square, not whole square. 15 का square is 220. So answer is 225. I hope you have understood this particular topic. This is a very, very important topic to understand the basics of maths. So if you like my way of teaching, then please share and subscribe to my channel and keep on practicing math, because math is easy. Thank you.